Good morning, class. Today we will discuss about the next property of addition. Okay, before this we are discussing about the two properties of addition. The first one is known as closure property of addition and the second one is known as commutative property of addition. Okay, in the case of closure property of addition, okay, we are discussing about that when two integers are being added then we get the integer, or in the case of commutative law of addition, okay, if we will change the order then we get the same result, means what, a plus b is equal to what, b plus a. Okay, now see the third property is what, associative law of addition. Okay, class, the most important thing is there, how can you finalize in the case of associative law or in the case of commutative law, how many integers will we use in the case of commutative law or in the case of the associative law. Okay, so firstly I tell you, two integers will be used in the case of commutative law, but three integers will be used in the case of associative law. Okay, in both the law we will change the order. Okay, then we get two terms, LHS and RHS. Okay, and in the case of law of addition, okay, associative law can follow the law of addition as well as commutative law can also follow the law of addition. Okay, in these two laws we are just going to change the order. So today we will discuss about the associative law. Okay, associative law, okay, if a, b and c are the three integers. Okay, how many integers are there? Three integers are there in the case of associative law. Either we have the associative law of addition, we have the associative law of multiplication, we have the associative law of subtraction, we have the associative law of division. if it is, अगर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर तीन integers होंगे. Got it? And we will change the order and get the result. Okay, so in the case of associative law of addition, how many integers are there? Three integers are there. The first integer named a, second integer named b, and the third integer named c. Okay, how can we write? A should will be taken as individual, a plus inside the bracket b plus c is equal to what, a plus b will be in bracket. Okay, and after that plus c is there. Okay, LHS must be equal to what, RHS. Okay, how can we write, how can we take the order? Okay, how can you finalize the order in the case of associative law of addition? जो पहला इंटीजर होगा वो अकेला होगा, इंडिविजुअल होगा, प्लस जो दो इंटीजर्स होंगे, ठीक है, वो ग्रुप में होंगे. ठीक है, इन द आरएचएस फर्स्ट टू इंटीजर्स आर इन द ग्रुप and the last integer will be alone. Okay, so a plus inside the bracket b plus c is equal to what, inside the bracket a plus b plus c is there. Okay, just see the example. Suppose we have the example of this one. Three numbers are what, a is what, 3, b is what, 4, and c is what, 5. Okay, then according to the associative law, okay, this one is taken in the form of LHS and this will be taken in the form of RHS. Okay, if both are satisfied then we can say associative law can follow the law of addition. Okay, what are the three integers? We have the three integers a, b and c. Here we have the numerical value of a is equal to what, 3, b is equal to what, 4, and c is equal to what, 5. Got it? How can we write? A plus b plus c, b plus c is inside the bracket. Okay, this one will be taken in the form of LHS. Firstly you solve according to the BODMAS. Okay, class, just keep in your mind, when you solve the problem then you will follow the BODMAS rule. Okay, here BODMAS will be applicable. Then firstly you solve the small bracket. Okay, what will be the result in the case of the small bracket? 4 plus 5, 9. Then 9 plus 3 is what, 12. Okay, this result will come in the case of what, a plus b plus c. Okay, in the case of LHS. After that RHS, a plus b inside the bracket plus c means what, 3 plus 4 will be inside the bracket plus 5. Okay, again we will apply the BODMAS rule. 3 plus 4 is what, 7, 7 plus 5 is what, 12. Okay, this 12 and this 12, these two are being same.
Okay, so we can say LHS must be equal to what? RHS. Okay, means a plus inside the bracket b plus c must be equal to what? Inside the bracket a plus b plus c. Okay, either we have any type of integer. Any type of integer means either the integer can consist positive sign as well as the integer can consist the negative sign. Okay, then in that case, if you want to show that associative law, then this will prove associative law of एडिशन. ओके, मतलब अगर इंटीजर्स के साइन को भी अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. ठीक है, रिजल्ट विल नॉट बी डिफरेंट. रिजल्ट हमें डिफरेंट नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड? जस्ट सी द अनदर एग्जांपल. We have the three integers, okay, a, b and c. First integer is what? 4. Second integer is what? -6. And the third integer is what? -8. Okay, how can we write? According to the associative law, a plus inside the bracket b plus c, bracket close. Then a plus 4 plus inside the bracket, okay, -6 plus -8. Okay, got it? Then firstly you want to solve the small bracket. When you will open, then -6, here plus minus is what? Here we are just going to do the multiplication. Okay, जब भी दो साइन एक साथ यूज होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस इज देयर. -6 -8, व्हाट वी हैव? -14. ओके, मीन्स 4 प्लस, हाउ कैन यू राइट? 4 प्लस विल बी रिटन एज इट इज 4 प्लस, और हियर इज व्हाट? -14. अगेन two sign will be taken together, plus or minus. What? Plus or minus? Minus will be there. Then 4 minus 14, what the answer? -10. Okay, how can you finalize the answer? 4 minus 14, 4 will consist the positive sign and 14 will consist the negative sign. Okay, when the number will consist opposite sign, then there, that is the case of subtraction. Okay, and after doing the subtraction, what the result we have? That result will consist the sign according to the number which one is greater. ठीक है, 10 आएगा. 10 के पास कौन सा साइन होगा? ये डिपेंड करेगा इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है और उस नंबर के साथ कौन सा साइन है. तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 14 बड़ा है. 14 के साथ कौन सा साइन है? माइनस है, तो माइनस साइन होगा. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी विल चेंज द ऑर्डर. ओके, a प्लस बी विल टेकन इन साइड द ब्रैकेट प्लस सी. देन अगेन प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन इज देयर. -4 - 6, what? -2. Okay, then plus minus, -2 or -8. Okay, then what? -10 is there. Got it? Then we can say LHS must be equal to what? RHS. Okay, so regarding to this, we can say that law of addition can follow the associative law. Got it? Law of addition can follow the associative law. Now property number 4, zero property. What is the meaning of zero property? ओके, सपोज ए इज़ एन एनी इंटीजर. बेटा यहाँ पर इंटीजर का मतलब ये समझिएगा कि आइदर यू हैव द पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स दिस रिजल्ट इज ट्रू, आइदर यू वांट टू टेक द पॉजिटिव इंटीजर और यू विल टेक द नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, यहाँ पर केवल एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटीजर. उस इंटीजर का मतलब ये है कि चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर लेके चलिए, चाहे आप नेगेटिव इंटीजर लेके चलिए, दोनों ही केसेस में, ठीक है, चाहे क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो, चाहे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो, चाहे जीरो प्रॉपर्टी हो या एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो, एनी प्रॉपर्टी विल बी एग्जिस्टेबल. हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, चाहे इंटीजर किसी भी टाइप का हो. ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना आपको. इंटीजर किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. आइदर यू वांट टू टेक द पॉजिटिव इंटीजर और यू विल टेक द नेगेटिव इंटीजर. Understood my point? Okay, just see the next property. Next property is what? Zero property. What is the meaning of zero property? Anyone can tell me what is the meaning of the zero property? What are you understood? Zero property means what? If zero will added, okay, to any integer or any integer will added with zero, दोनों का मतलब पहले समझिएगा. If zero will added with any integer or any integer will added with zero, then the result is what? The integer itself. यानी कि ज़ीरो को अगर हम किसी इंटीजर में ऐड करते हैं या किसी इंटीजर को हम
जीरो में ऐड करते हैं तो दोनों ही केस में आंसर क्या होगा, द इंटीजर इट सेल्फ. गॉट इट. सी हियर, सपोज दैट द इंटीजर इज व्हाट, ए प्लस जीरो, ठीक है, व्हाट, जीरो इज देयर, sorry, a plus 0 is what, a is there, okay, and 0 plus a what, a is there in both the cases. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंटीजर में हमने जीरो को ऐड किया है और इस केस में क्या है, जीरो में हमने इंटीजर को ऐड किया, लेकिन दोनों ही केसेस में आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है. ए प्लस जीरो, ए इज देयर, जीरो प्लस ए इज देयर. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, वन प्लस जीरो, जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो, वन इज देयर, जीरो प्लस वन, वन इज देयर, बोथ विल गिव द सेम आंसर. माइनस फोर प्लस जीरो, ठीक है, माइनस फोर, 0 plus minus 4, firstly here you do the multiplication, minus 4, 0 minus 4, minus 4, okay. 27 plus 0, 0 plus 27, 27. मतलब नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तब भी यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 27 ही मिलेगा. ठीक है, जीरो में यदि हम नंबर को ऐड करते हैं तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 27 ही मिलेगा. इन बोथ द केसेस वी गेट द सेम आंसर. Okay, so that is the meaning of the zero property. I think all of you understood what is the meaning of the zero property. Okay, now the fifth one is additive inverse of an integer. What is the meaning of the additive inverse? You know what is the meaning of the additive inverse? Additive inverse means you want to take the opposite value of the given integer. Suppose that if you have the positive integer, then you will take the negative integer and the sum of these two integers must be equal to what, 0. Okay, then we can say that the opposite integer will be treated as the additive inverse. ठीक है, अगर कोई भी इंटीजर आपको दिया गया है तो उस इंटीजर का अपोजिट इंटीजर आप ले लीजिए. सपोज दैट अगर दिया गया इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है -4, then you want to take the positive integer +4. Okay, and after that you will be add these two integers. Okay, and we get the result must be equal to 0. और अगर हमारा रिजल्ट 0 के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर हमने अपोजिट लिया था वही इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, लेकिन एडिटिव इनवर्स के केस में जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ठीक है, सपोज ए इज़ एन एनी इंटीजर. ठीक है, अब ए कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका अपोजिट इंटीजर क्या होगा, माइनस है. इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर माइनस ए नेगेटिव इंटीजर दिया गया है, then you want to take the positive integer and the sum of these two integer must be equal to what, 0. So for this minus a is the additive inverse. माइनस ए दिया गया है तो प्लस ए इज द एडिटिव इनवर्स. ओके, नाउ सी फॉर एग्जांपल 5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, -5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा. दिस इज द मोस्ट important thing in the case of additive inverse. Okay, the sum of the given integer and the opposite integer must be equal to what, 0. The sum of the given integer and the opposite integer must be equal to what, 0. Got it. -20 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +20. +20 का एडिटिव इनवर्स -20. क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा. 31 का एडिटिव इनवर्स -31. -31 का एडिटिव इनवर्स 31. क्यों, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6, एवरी इंटीजर हैज़ अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 6. एवरी इंटीजर, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है, एवरी इंटीजर, ठीक है, हैज़ अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर. कोई भी इंटीजर आपके पास है, ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आफ्टर वैल्यू. जो इंटीजर दिया गया है उस इंटीजर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आफ्टर वैल्यू सक्सेसर हमें मिल जाता है. ठीक है, जो भी इंटीजर हमें दिया गया है अगर उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, या 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द integer, then we get the predecessor. Okay, so this should be finalized. ठीक है, for any integer either we have the positive integer, we have the negative integer. चाहे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हमारे पास हो, ठीक है ना,
उस इंटीजर के लिए हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इन द केस ऑफ ज़ीरो इंटीजर, ओके, वी विल फाइनलाइज ओनली सक्सेसर, ओके, वी विल नॉट फाइनलाइज प्रीडिसेसर। ज़ीरो के केस में हम केवल सक्सेसर को फाइनलाइज कर सकते हैं, प्रीडिसेसर को फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, so till here you may complete the exercise. Okay, in the next video we will discuss another thing. Okay class, okay, thank you very much.